and CT360 series session in which we cover the most important G and ESI current affairs from the exam point of view. And my dear friends, today again let me tell you that I have brought here one of the very important topics of the last 2 days, that is of 8th to 9th of November 2024, and we will be discussing all the important current affair articles of the last 2 days. And let me tell you that this session is really going to be helpful for all the aspirants who are preparing for RBI, NABARD and other important government examinations. So I believe that I am audible and visible to all of you, and all of you are really preparing well for our upcoming exams, and it is a good time that we can start with the today's session in which we will be covering the most important current affair articles of 8th to 9th of November 2024. Coming to the agenda of the today's session, that is the topics that we will be discussing in the today's session. It includes the scheme for strengthening the medical devices industry, World Science Day, 17th District of Nagaland, Austrahind, and some other important news articles which I am having today to discuss with all of you for your preparation of current affairs section. So let's start with the very first important topic, the topics which is relevant for both phase 1 and phase 2 of this particular exam. So my dear friends, before directly moving and jumping to the topic, I would like to tell you that in our country, we all know that India is really a very high populous country, right? And that is why for the proper health of the human resource that we are having, we really require a good healthcare structure in our country. But in India, we are really struggling with this. Why so? Because we are heavily relied on importing the key components as well as the raw materials which are really required for the manufacturing of key medical equipment, and we are really basically dependent on the foreign countries. And we all know that during the COVID-19 pandemic we have seen that we were really short of so many medical equipments, and that was a time when India decided and took a pledge to become Atmanirbhar Bharat. And that is why, seeing this particular scenario in our country, Government of India has come up with a brilliant idea, where as earlier we were really dependent on the so many key components and the raw materials, and we were importing those things from outside world. So guys, let me tell you that in order to make India a good manufacturing hub of these key components, what exactly we require? We require some good common infrastructure facilities in our country. We require a skilled workforce in our country which can really work upon this particular part, and they can come up with these skills so that we can really become the manufacturing hub of these key components of medical devices sector. Apart from that, we need support of the clinical studies in our country, which includes the animal based studies and also then followed by human trials of those medicines. And in the last, we need industry promotion. So covering all these important areas, the Government of India has recently come up and launched a very important scheme, that is the scheme for strengthening the medical device industry. तो medical device industry जो इंडिया के अंदर है उसको strengthen करने के लिए एक scheme को launch किया गया है recently by the Government of India, and the name is the scheme for strengthening the medical device industry. And this scheme is really going to boost the medical devices industry in our country. And how it will be doing that? It will be doing that by covering manufacturing of key components and accessories. As I already told you that we were really dependent on the imports from the other countries. So the very first thing is the manufacturing of key components and accessories. And for the manufacturing of these key components, what we require? We require the high skilled workforce, and that is why skill development is really very important for this particular industry. That yes, we are providing the proper skill development to the people, we are creating the human workforce, and yes, they will be working on the manufacturing of these components and accessories in our nation, fulfilling the requirement of our country. After that, when we are having the good skill workforce, guys, we really require support for the clinical studies. तो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, बट अब हमें क्या करना है? हमें स्टडी करनी है सो दैट कि हम उन मेडिसिन को क्रिएट कर सकें. तो मेडिसिन को बनाने के लिए वी नीड क्लिनिकल स्टडी, और उसके लिए वी नीड सपोर्ट. तो सपोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम. एंड apart from that, we will also focusing on the development of common infrastructure, which is really important. And after that, the most important thing is the marketing of the same, so that कि even अगर हम एक manufacturing hub बन रहे हैं तो हम export भी कर सकते हैं. So for that we need good industry promotion. So across all these aspects, this scheme is really going to work. तो I believe कि ये important points आप सभी को एकदम clear होंगे that we are really required to cover from this particular scheme. And see guys, when we are having such a ambitious project
before us, we require some kind of expenditure as well from the government of India, and that is why government of India has allocated rupees 500 crore for this particular scheme of strengthening the medical device industry. And let me tell you that across all these particular components we will be having the different sub schemes under this particular scheme, and these schemes include common facility for medical devices clusters, then marginal investment scheme for reducing import dependence. तो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी जिससे हम इंपोर्ट डिपेंडेंस को यहां पर मिटिगेट कर सकते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग सब स्कीम होगी, देन क्लिनिकल स्टडीज के लिए एक अलग स्कीम होगी, एंड देन मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम विल आल्सो बी देयर, एंड द टोटल outlay of all these schemes have been mentioned here in a detailed manner in this particular table. तो हम देख सकते हैं टोटल बेसिकली टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर दिस स्कीम इज रुपीज 500 करोड़. So I believe कि the major important part of this scheme and what are the key important target areas, all of you will now be able to correlate this with part. ठीक है जी. So guys, we all know that medical device has really become a important pillar of the healthcare industry, and we find them in everyday life that it is really a very high significant industry, and really we are required to work upon this part. And let me tell you guys that India's medical device market is presently valued at approximately $14 billion. तो $14 billion इस टाइम पर वैल्यू है इंडिया की, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय $30 billion. So why not we can just make the most out of it, and we can really work and come up with a game changer scheme so that we can really transform the medical device industry sector of our nation. That is why this scheme has been come up by the government of India. And now it's the time for us to basically cover the important details of these sub schemes that are being launched as a part of that particular major scheme. So guys, here the very first important sub scheme is the scheme for common facility for medical device clusters. तो medical devices clusters, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इनके लिए? We need some financial assistance. In medical devices clusters के लिए we require some good amount of financial assistance so that we can create the common infrastructure facilities in our country, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यहां पर डेफिनेटली काम कर सकते हैं और चीजों को क्रिएट कर सकते हैं. एंड व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स इंक्लूड? द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूड research and development labs, design and testing centers, enable labs, because all of these things are required in order to create and manufacture such kind of key components of the medical devices industry. Apart from that, we require support for strengthening existing testing facilities. जो अभी testing facilities हैं उनको भी support provide करना है so that we can strengthen them and we can scale up those testing facilities. And for this, my dear friends, we require some financial assistance from the government, and that is why government will be providing grant of up to rupees 20 crore for the common facilities and 5 crore for the testing facilities. तो यहाँ पर 20 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे कॉमन फैसिलिटीज के लिए, 5 करोड़ दिए जाएंगे टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए. सो आई होप कि ये पहली सब स्कीम आपके सामने एकदम क्लियर है, दैट द सब स्कीम फॉर कॉमन फैसिलिटीज फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स, इसके अंदर कॉमन फैसिलिटीज प्लस टेस्टिंग फैसिलिटीज दोनों रहेंगी. कॉमन फैसिलिटीज के लिए रुपीज 20 करोड़ दिए जाएंगे एज अ ग्रांट, एंड the testing facilities rupees 5 crore will be given. I hope that all these details are very much clear to all of you. And now guys, let's move on to the next important sub scheme under this part. So the next part is the scheme for providing marginal investment support. तो एक marginal investment support provide किया जाएगा. क्यों किया जाएगा? So that we can reduce dependency. So अभी हमने बात की कि we are really dependent on importing the components from the outside countries. From the foreign countries we are importing the components. तो उस डिपेंडेंसी को यहां रिड्यूस करने के लिए वी विल बी प्रोवाइडिंग मार्जिनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू दीज मैन्युफैक्चरर्स, एंड दिस विल ऑल्सो डीपन द मेड टेक सप्लाई चेन. तो सप्लाई चेन जो है इंडिया के अंदर उसको भी यहां पर स्ट्रेंथन किया जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल बी फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द की कंपोनेंट्स. तो की कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, एक्सेसरीज हैं, तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जाएगा सो दैट वी कैन रियली बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम the import part. We can really reduce our dependency on these imported things that we are importing from other countries. And for this guys, there is a one-time capital subsidy which will be provided to the manufacturers, and it will be of 10 to 20% और per project यहाँ पर rupees 10 करोड़ तक की of subsidy provide की जाएगी by the government. तो दूसरी सब स्कीम आई होप दैट आप सभी को एकदम क्लियर होगी, द सब स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग मार्जिनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट. तो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? सो दैट कि हम इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो काफी कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द
foreign countries, we will be able to reduce that dependency of imports. So now let's move on to the next sub scheme, that is capacity building and skill development. I told you that now we are having the common infrastructure facilities, we are having the support as well, हमें financial support भी मिल रहा है. तो उसके बाद क्या importance है? The important thing is the good skilled workforce. तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है हमारी वर्कफोर्स की, और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई वी विल बी डेवलपिंग अ skilled technical workforce which will be capable of designing and developing the medtech products. And for this, central government again will be providing the financial support. और इसको हम कैसे कर सकते हैं guys? अगर हमें किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो आप सभी देखते हैं आजकल there are so many certification courses are there, but now right now we are talking about the lives of the people. तो उसके लिए हमें कुछ और इंपॉर्टेंट करना होगा. So for this we will be having some master courses, और मास्टर कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग ₹21 करोड़. सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 21 करोड़ रुपीस का सपोर्ट दिया जाएगा फॉर द मास्टर कोर्सेज. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उसके लिए 10,000 पर कैंडिडेट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. और जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं which are approved institutes of the NCVET, that is National Council for Vocational Education and Training. तो जो नेशनल काउंसिल है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, उसके जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर 25,000 रुपीज पर कैंडिडेट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल फॉर द डिप्लोमा कोर्स स्टूडेंट्स. सो यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो गई और स्किल डेवलपमेंट भी होगी, राइट. कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे पास है. नाउ वी आर हैविंग द प्रॉपर फंड, वी आर हैविंग द स्किल फोर्स एज वेल. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी रिक्वायर? वी रिक्वायर द क्लिनिकल स्टडीज. अब हमें सपोर्ट चाहिए क्लिनिकल स्टडीज के ऊपर. एनिमल की जो स्टडी की जाती है, लैब्स के अंदर स्टडी की जाती है कि वेदर दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव ऑन देम और नॉट. सो उसके बाद या ह्यूमन ट्रायल्स की बात आती है. सो यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है द सपोर्ट फॉर द क्लिनिकल स्टडीज. एंड फॉर दैट this particular part has been designed to assist both established companies and the startup. तो जो startups हैं या established companies है, दोनों को ही clinical studies को conduct करने के लिए यहाँ support किया जाएगा. और जो हमारे device developers हैं, manufacturers हैं, they can also apply for financial support for the animal studies. और अगर वो successful होता है then they can also apply for the human trials as well to validate the medtech products. तो human trials भी वो कर सकते हैं उसके बाद. And for this the financial support of ₹2.5 crore will be provided for the animal studies. और clinical investigation of investigational devices and post market clinical follow-ups on the approved devices. एक मैक्सिमम कैप रहेगा ₹5 करोड़ का विच विल बी अवेलेबल टू जनरेट क्लिनिकल डेटा. तो क्लिनिकल डेटा जनरेट करने के लिए 5 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे. क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है, इन्वेस्टिगेशनल डिवाइसेस और पोस्ट मार्केट क्लिनिकल फॉलोअप्स के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. इसके अलावा 1 crore rupees will also be given for granting for clinical performance evaluation. तो clinical performance की evaluation जो होती है उसके लिए भी 1 crore दिया जाएगा. ठीक है. So you can see here that government is now trying to support the industry at every single step so that we can make sure that we are really revolutionizing and transforming the medical device industry of our country, and we are reducing the dependency on the import from the other countries. And with this we will be promoting safety as well as efficacy of medical devices in our country. Now guys we are done with this part. Now the what is the last thing? तो हमारे पास common infrastructure facilities हैं, हमारे पास funding support है, we are having the skilled workforce, we are having the money for the clinical studies as well. Now what exactly we require? Now medicine is ready. What exactly now we require? The product is ready, we require the promotion, industry promotion is required. So the next sub scheme is the sub scheme on medical device promotion. तो devices promotion के लिए भी यहाँ पर एक sub scheme को launch किया which will be support industry association and export councils. जो हमारे exports councils हैं उनका और जो industry है उनका association किया जाएगा so that कि we can really see and we can really do the marketing of our products जिससे कि हम उसको scale up कर सकें and we can really make India a global hub for such kind of components and devices. And for this we will be providing the financial assistance to organize conferences. So guys जब भी हमें किसी की मार्केटिंग करनी है या ऐसे प्रोडक्ट पेजेस करनी है तो उसके लिए हमें कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना रहता है, राइट. हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हम इवेंट्स को यहाँ पर कर सके कंडक्ट सो दैट कि हम बता सके कि यस वी हैव क्रिएटेड दिस मेडिकल प्रोडक्ट
you can take them, this is the use of this product. तो सभी चीजें हम यहाँ बता सकते हैं, but for that we need some good conferences and events for that, and that's why to promote these products we will be conducting such conferences and events. And it will also support conduct of surveys and studies as well, so that we can really identify the requirement that okay, what exactly the population is requiring at this point of time. So my dear friends, I think that now it is very much clear for all of you that yes, what exactly this scheme is all about. And this scheme has been launched with a total outlay of rupees 500 crore. So अगर आप सभी को ये स्कीम एकदम क्लियर है तो मुझे थम्स अप दीजिए चैट बॉक्स के अंदर that yes, we are done with this particular scheme and we all are aware now of this particular scheme. So I want thumbs up from all of you so that I can get the assurance that yes, you guys are done with this particular scheme, and we can then move on to the next important news articles. So I'm waiting for your responses in the chat box. So thank you for giving me your responses, guys. Now let's move on to the other important न्यूज आर्टिकल्स विच आर रेलिवेंट फॉर फेज 1. तो हमारा ये फेज 1 और फेज 2 रेलिवेंट टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो गया है. आई होप कि ये स्कीम आप सभी को अच्छे से क्लियर है. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ. सो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज से. सो द डे विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. और ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 10th of November को. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे ऑन 10th of November with the theme of youth at the forefront. So youth at the forefront will be the theme for this particular day this year, and let me tell you that this day signifies the role of science in society and the need to engage the wider public. तो ये part इतना important नहीं है. It is just for providing you the context. I have added this. The important part is the date. The next important part is the theme. Now there is another additional information that we need to cover from here. That is, इस साल जो ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इट विल बी अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेशनल डेकेड ऑफ साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंटरनेशनल डेकेड ऑफ साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब कौन से पीरियड के लिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? वी आर मार्किंग दिस डेकेड फ्रॉम 2024 टू 2033. ठीक है, तो याद रखिए इसको, इंटरनेशनल डेकेड ऑफ साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? Because we all know that we are having sustainable development goals that we want to achieve by 2030, right? तो इसी तरीके से डेकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस का क्या रोल रहेगा इसके अंदर, तो ये हमें ड्यूरेशन भी पता रहनी चाहिए, राइट? बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ. सो मेलूरी हैज ऑफिशियली बिकम द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. सो गाइस, वी ऑल नो दैट अर्लियर देयर वर ओनली 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड. नाउ मेलूरी, व्हिच वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फेक. ठीक है, तो यहां पे फेक डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हो. तो इसका ये पहले पार्ट होता था, एंड नाउ इट विल in itself it has become Meluri, which is declared as the 17th district of Nagaland, and it is inhabited by the Pochuri Naga tribe, and the state government has announced the elevation of this subdivision, which was currently part of the fake district, to a full-fledged district, and this aim is towards improving governance and development in the region. तो हमें इतना कुछ याद नहीं करना. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? The name of this 17th district of Nagaland, that is Meluri, which can be asked in the exam. Okay, now moving on to the next part. So the next news article is about the defense exercises. So this year, third edition of the joint military exercise Austrahind has commenced, and where it has commenced. So whenever we are covering defense exercise, the name of the exercise is very important. Then the countries which are participating. So this exercise is conducted between India and Australia. Okay, and what is the venue? Venue is the Maharashtra. So venue is also important. The Maharashtra is the venue for this particular exercise. और ये exercise once again promotes the military cooperation between the India and Australia, और इससे हम enhance करेंगे अपनी interoperability को. ठीक है, तो इस exercise के साथ साथ let me guys tell you that some other exercises also we have covered in the previous 1 month as well, which includes the Kazand exercise. Can anybody tell me that what is the name of country between which Kazand exercise has been conducted? So Kazand, Kaz stands for Kazakhstan and IND stands for India. So this exercise has been conducted between India and Kazakhstan. Similarly, there was another exercise, that is Malabar exercise. Malabar exercise was being conducted among the Quad countries. What are these Quad countries? It includes Australia, US, Japan and India. और ये कहां पर हुई थी? दिस वॉज हेल्ड इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश.
तो विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था. आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ सिम्बेक्स एक्सरसाइज. सो इट इज बीन कंडक्टेड बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया. सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज. नाउ वी हैव अनदर एक्सरसाइज, नसीम अल बहर. Nasim Al Bahr exercise was being conducted. It was conducted between India and Oman. तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज से हम बाकी एक्सरसाइजेस को भी कवर कर सकते हैं. आई होप कि ये डिटेल्स आपको एकदम क्लियर होंगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हैज बीन कंडक्टेड रिसेंटली. सो सेकंड एडिशन हुआ था इस फेस्टिवल का. कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. एज द नेम सेज, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल. तो जो हेरिटेज है हमारे मिलिट्री की, यहां पर हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है. एंड इट इन्वॉल्व्स द एंगेजमेंट ऑफ द ग्लोबल एंड इंडियन थिंक टैंक्स, and they together focuses on India's national security, foreign policy and the military history and heritage. तो history, heritage, foreign policy, national security, इन सभी parameters पे discussions होते हैं, and all these stakeholders come together on this one single platform and they discuss about all these things. Now guys, let me tell you that during this particular festival a project has also been launched. The project is Project Shaurya Gatha. Shaurya Gatha. Why we are coming up with this kind of project? So that we can conserve एंड प्रमोट द इंडियाज मिलिट्री हेरिटेज. जो इंडिया की मिलिट्री हेरिटेज है उसको हम कंजर्व करें और प्रमोट करें. कैसे करेंगे? एजुकेशन और टूरिज्म की हेल्प से. सो गाइस, एज दिस इज बेसिकली अ मिलिट्री इनिशिएटिव, तो ये इसको लॉन्च कौन करेगा? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड द यूएसआई ऑफ इंडिया. तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड यूएसआई ऑफ इंडिया, दे हैव टुगेदर कम अप विद दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ द प्रोजेक्ट शौर्य गाथा. अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मिलिट्री हेरिटेज, राइट आंसर विल बी प्रोजेक्ट शौर्य गाथा. अपने शौर्य की गाथा को कंजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए वी आर कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Now moving to the next part. So NTPC has celebrated 50th Raising Day, marking 5 decades of powering India's growth. So guys, let me tell you that NTPC ने अपना 50th Raising Day recently celebrate किया on 8th of November 2024. Let me tell you, apart from this, recently कोल इंडिया, आप सभी जानते होंगे कोल इंडिया लिमिटेड को, राइट? इसका नाम आपने सुना होगा. तो कोल इंडिया लिमिटेड हैज रिसेंटली स्टेप्ड इनटू द 50th ईयर. ये अपने 50th ईयर में आया है और एनटीपीसी ने अपने 50 ईयर्स यहां पर सेलिब्रेट किया, 50th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है. आई होप कि ये डिफरेंस आपको याद रहेगा और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप एकदम याद रखने वाले हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज. सो गाइस, लेट मी टेल यू दैट इन द एग्जाम, in the end of the day, we are required to solve the MCQs. Just remembering and just covering these important news articles is not sufficient, क्योंकि जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं किया, जब तक MCQs को सॉल्व नहीं किया, तब तक ये सब सिर्फ पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है. तो उसके लिए टुडे फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी की प्रैक्टिस के लिए आई हैव ब्रॉट हियर सम प्रैक्टिस एमसीक्यू, जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे वेदर वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट. तो पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है. तो आज एक दो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल करंट पैटर्न पे डाले हैं, जो कि इस साल हमारा जो पैटर्न था और पिछले पैटर्न से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, डैश हैज इनहेबिटेड बाय द पोचुरी नागर ट्राइब has been officially declared as the 17th district of Nagaland. तो 17th district बना है नागालैंड का, ठीक है. So here options are फेक, मेलुरी, त्योंसांग, वोखा, नुकलाक. तो जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर what is the right answer to this question. So here Gururaj is saying option B is the right answer, that is मेलुरी, and I believe that आप सभी भी इस ऑप्शन से अग्री करेंगे. And yes, right answer is option B, मेलुरू is the right answer. Well done, Happy and Gururaj. अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. Next question is from the scheme for strengthening the medical device industry, and here today we have to identify the correct statement about the scheme. So again, I always tell you that whenever you are seeing such kind of question, make sure that you are focusing on the keywords. तो यहाँ पर keywords पर हमें फोकस करना है, राइट? तो हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले डिमांड क्या है क्वेश्चन की, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना. पहली स्टेटमेंट है, what is the aim of the scheme? That is, we want to provide boost to the medical device industry in our country, और फाइनेंशियल आउटले है 500 करोड़. तो ये फैक्चुअल डेटा भी हमारे एकदम क्लियर है. ये जो थ्योरेटिकल डेटा है, दैट इज द एम ऑफ द स्कीम, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. मूविंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, द टारगेट क्रिटिकल एरिया ऑफ द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इंक्लूड स्किल डेवलपमेंट. तो हमने बात की थी कि हम क्यों इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, एंड फॉर दैट
To do that, what we want to have, we want to do skill development of the workforce. We want to provide support for the clinical studies. We want to develop the common infrastructure facilities in our country. We want industry promotion. So that's why the second statement is also right. Now moving to the third statement. So there are 5 sub schemes, absolutely right. कॉमन फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर जो सबसे पहली सब स्कीम थी इस स्कीम की, इट इज हैविंग द total outlay of 110 crores. So this part is absolutely right. So here the third statement is also right. So what will be the right answer here? Option 3, option D will be the right answer. That is all 1, 2 and 3 are absolutely right. So मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ that none of you have given me option D as the right answer. Some people are saying option B, some are saying option A. So Harika, Nidhi, Pallu, Gururaj, guys, option D is the right answer to this question because all these statements are absolutely right. Now moving on to the next important question. So the question is from the important days, World Science Day for Peace and Development. तो आप ऑप्शन पे सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर in the first parameter they are asking you the date and in the second parameter they are asking you the theme of that particular day. ठीक है, तो यहाँ पर डेट और थीम, अगर हम बात करें ये डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है, 10th ऑफ नवंबर को होता है. अगर खाली आपको डे भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बाकी ऑप्शंस के अंदर डेज आर डिफरेंट. तो ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक भी आप सीधा लगा सकते हो एग्जाम के अंदर. इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर 80 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स इन द आरबीआई एग्जाम. ठीक है, सिमिलरली नाबार्ड एग्जाम के लिए भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं. राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड हियर Jalaj, Gururaj, happy all the people have given me the right answer. That is option A to this particular question. So guys, well done to all the people who have given right answer to this question. Now it's the time for the homework question, and homework question here again is on the scheme for strengthening the medical device industry. So all the people who will be giving right answer to this question in the comment section of this session, guys, I will be taking your name as a star performers of this particular session in my next session. और अगर हम बात करें इसी तरीके स्टार परफॉर्मर ऑफ द प्रीवियस सेशन, तो प्रीवियस सेशन में भी देयर वाज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड द क्वेश्चन वाज ऑन द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. तो हमने विद्या लक्ष्मी की कहानी पढ़ी थी इन द लास्ट सेशन. आई होप कि आप सभी को वो कहानी एकदम याद है और उसके जरिए हमें आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट दिस स्कीम. So let me tell you guys here the right answer was option C, that is statement 2 only was the correct. Why? Because in the statement 1 the outlay was incorrect. The outlay is 3600 crore for this particular scheme. And now when we talk about the another important interest subvention facility that government is providing as a part of PM Vidya Lakshmi scheme, so उसके अंदर जो family income है वो आपकी 8 lakhs तक होनी चाहिए ना कि 6 lakhs तक. So that is why this statement number 3 was also incorrect. Right answer was option 2 only. So I can see here in the chat box all the people are giving me the right answer to this. So well done guys, and these are the star performers of the previous session. Includes Sabyam, Happy, Aditya, Akshay, Shubhashri, Abstract, Minushama, Gururaj, Sharat, Vivek. All these people have answered the question correctly, and thank you Minu and Sabya and Deepshika for your kind words and for your encouragement by giving the positive feedback of this particular session. ठीक है, अगर आप सभी को भी आज का सेशन गाइस अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं अपना व्यू इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ अगर बुरा लगा है तो भी आप मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर, सो दैट आई कैन कवर दोज पॉइंट्स एंड वी कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम आपको एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो for this you can definitely give me the feedback and we will definitely include your feedback in our upcoming sessions. So guys, I hope कि आज का सेशन आप सभी के लिए useful and fruitful था, and if you are still new to your YouTube channel you can subscribe it by clicking on the bell icon, and you can also subscribe the channel. और अगर आपको हमारे सेशंस का PDF चाहिए तो वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो by clicking on the link given in the description of this particular session. So definitely आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए सेशन को, क्योंकि आगे जो हम रिवीजन सेशंस लेंगे तो वहां पर डेफिनेटली दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. एंड गाइस, अगर आपकी अब कोई भी क्वेरी है आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस सेशन के रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरी, कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी डाल सकते हो. एंड इफ यू वांट सम मेंटरशिप गाइडेंस यू कैन कॉल अस एट 8146207241 एंड यू कैन email us at hello@edutap.co.in.
ठीक है. So I can see here that there are no more queries, there are no queries in the chat box, and we are good to conclude this session, guys. So I will keep on coming with such more interesting sessions and wish you all the best for all of your exams. And my dear friends, till the time I will be keep on coming for the next session, wish you all happy learning.